previous session, we saw how this girl Amina taught the painter a lesson. I am Aman, and today we are in the fifth part of our chapter, Where to Look From. These are the pictures. I hope you have made completely. इन पिक्चर्स को अगर हम देखें, ये सारे पिक्चर्स हाफ हैं, आधा है. आपको करना क्या था? आपको इन सारे पिक्चर्स के सामने मिरर को रखना था और आपको इन पिक्चर्स के जो आधा पार्ट है वो आपको प्राप्त होते हैं. So we can make the exact half of all these pictures, but there are things which we cannot divide exactly. Like you can take examples of these things. Here, caterpillar. Just try to divide it equally. Can you do so? No, we can't. Why? Because if we try to divide this caterpillar into two parts, both the parts will not look similar. Same here. Here, this is the cup which we are going to divide. Let's try to divide it. Here I have divided this cup in the middle of this one. What you get? In the one part we get a picture with this handle, but this handle is missing here. Here we find we cannot divide this cup equally. Try to do the same with this flag. Can we divide our flag equally? No, we cannot divide it. In the one part we will have this stick that we do not have in the other. We can do the same activity with English letters. In alphabet we have 26 letters. Many of them might be divided equally. Let's try it out. Here I have written some of them. Have a look on this letter. This is letter A. What if we try to divide our letter A equally? Can we do so? Yes, of course we can. Here I have divided this one. What about this C? Yes, we can divide A and C equally, but there are letters which cannot be divided equally. Here F, G. What if we try to divide this F equally? We can't do. And the same here, G. We can't divide G equally. Now your work is to make a list. In that list you have to mention which letters can be divided equally and which letters cannot. अभी हम लोगों ने देखा कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बीच से बिल्कुल ही डिवाइड कर सकते हैं और दोनों पार्ट्स एक दूसरे के हूबहू समान होंगे, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल समान रूप से डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते. तो मैंने कुछ इंग्लिश लेटर्स लिए थे, तो मैंने आपको यहाँ दिखाया है. आपको करना क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स होते हैं आपको उन्हें एक लिस्ट बनाना है और आपको उन लेटर्स को अलग अलग लिखना है. जो लेटर्स डिवाइड हो सकते हैं उन्हें आप एक लिस्ट में लिखोगे, कैन बी डिवाइडेड इक्वली, और कुछ ऐसे होंगे जो इक्वली नहीं बांटे जा सकते, आप उनको एक लिस्ट में बनाकर लिखेंगे. सम ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन गिवन हियर, जस्ट ट्राई टू डिवाइड देम. We will be discussing some more topics in the next session. Till then, bye.